So hi guys, a very good evening to all of you. This is Rahul Prajapati and welcome to this webinar. So probably you guys might be thinking that why we have conducted this webinar on Monday specifically when we just conducting the webinar specifically on Wednesday and Saturdays nowadays. Okay, there's a specific reason for this. So what is that reason? We're going to talk about this in a short while, right? Okay. So the topic for today is identifying the market trends. Okay, so why we have selected this topic again, a very important thing that we need to discuss from this perspective. The reason being is that does actually market is trying to find a bottom or we are reversing a trend? Okay, this is we are going to find this in the today's session. Okay, probably we'll try to confirm with data points. Okay, and we have seen that Nifty was in the downtrend recently, and we have seen a huge gap downs also in few sessions, right? Okay, and a lot of volatility we have seen, but is that market is reversing from this point or market has made a bottom? That's what we need to identify. Okay, so how we decide generally that okay, market has formed a bottom or market is going to form a bottom? तो उसके लिए people use different indicators. There are a lot of oscillators that people use. Okay, so I'll come to the first. Let's see the technical charts only. Okay, तो market bottom हो गया है ये ढूंढने के लिए what people use, right, specifically. तो generally अगर हम daily chart को study करें, okay, okay, so थोड़ा historically देखना पड़ेगा because the only reason that कहाँ से buying आएगा, we need to go historically and see that. Okay, so specifically अगर हम इस लेवल पे आकर के देखें तो ये एक सपोर्ट था जहां पर मार्केट ने ये रेजिस्टेंस था, मार्केट ने इसको ब्रेक किया, तो देन नाउ दिस लेवल हैज बिकम अ सपोर्ट. मार्केट ने इसको ब्रेक करने का कोशिश किया एंड देन अगेन केम बैक. सो एक बहुत अच्छे लेवल के बाद बाइंग आया है यहाँ पर एंड वी हैव सीन द मार्केट वेंट अप फ्रॉम 15,200 टू 15,800. सो क्वेश्चन ये है कि मार्केट ने ये बॉटम क्रिएट किया कि नहीं किया, ये कैसे पता लगेगा? ओके, so let's see what other thing we can use is generally people use RSI as a oscillator which help them to identify कि हाँ मार्केट में एक रिवर्सल आया है. तो रिवर्सल कैसे पता लगता है? जनरली दिस इज अ नॉर्मल प्रैक्टिस दैट वी फॉलो कि RSI में और प्राइस में अगर डाइवर्जेंस है इस तरीके से, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये वाला डाइवर्जेंस, राइट? ओके, सो डाइवर्जेंस कैसे हुआ? मार्केट ने बॉटम क्रिएट किया, RSI ने भी बॉटम क्रिएट किया एंड देन मार्केट वेंट अप, RSI वेंट अप. नीचे गिरते वक्त what happened specifically is कि प्राइस ने फर्दर लो क्रिएट किया और RSI ने नहीं बनाया. तो दिस कुड बी वन ऑफ द रीजन. यू कैन सी दैट कि मार्केट यहाँ पे इंडिकेटर्स और प्राइस दोनों एक साथ नहीं चल रहे, सो देयर इज अ डाइवर्जेंस हैपनिंग इन दिस. तो इसको बुलिश डाइवर्जेंस बोलते हैं. तो मार्केट ने यहाँ से एक रिवर्सल बनाना शुरू किया है. ओके, नाउ वी नीड टू सी फर्दर कि मार्केट कैसे डेवलप होता है, बट दिस इंडिकेटर इज फर्दर गिविंग मी चांसेस दैट कि मार्केट ने बॉटम क्रिएट किया 15,200 के आसपास. तो लॉजिकली 15,200 ब्रेक होगा तो मार्केट फिर से डाउन ट्रेंड में चला जाएगा. जब तक नहीं ब्रेक करा तब तक वी आर ओके. सो दिस सेज दैट मार्केट ने शायद बॉटम क्रिएट कर लिया. दिस इज द वन वे. सो दिस इज generally kind of a situation that we see using the technical analysis. तो अलग अलग तरीके होते हैं मार्केट को के रिवर्सल को ढूंढने में. ओके, नाउ coming back to the derivative data, probably very good and very interesting way I would like to share today. Generally क्या होता है कि derivative data anyhow does not suggest you that market has created a bottom or anything, right? Because it just show you how people have created a position till now. तो फ्यूचर्स में क्या पोजीशन बन रहा है OI का, दैट कुड बी वन थिंग, एंड ऑप्शंस के अंदर क्या पोजीशन बन रहा है, दैट कुड बी अनदर थिंग इन दिस. ओके, नाउ लेट्स कम टू द अंडरस्टैंडिंग दैट कि हम क्या स्टडी करने वाले हैं. तो एक बहुत स्पेसिफिक टूल आई एम गोइंग टू डिस्कस टुडे एंड दैट इज अ ट्रैप इंडिकेटर, राइट? ओके, so let me just okay, sorry, okay, just give me a second. Just one second, I need.
Okay. Now what we need to use it, we are going to use a trap indicator. Okay, now first understand the logic behind it. So what is a trap? So that is one thing we need to understand. So let's go to the open interest in the options. Okay, how do we identify there's a trap appearing in this? Okay, so what is a trap? Trap is basically whenever you see that the market is trending. Okay, so what will happen generally whenever you see this market is trending up or any way, right? Okay, so let me just show you one particular stock first, then we'll come to Nifty. Okay, so okay, now TVS Motor has moved up today. Okay, now what actually happened today, if you identify on 800 call option, the stock went up very good quantum today. Okay, and what actually happened on that 8,800 call option is that the option sellers were holding this as a resistance, right, earlier. So this was a major resistance that market was forming. Okay, fine. ये मार्केट का एक रेजिस्टेंस था, बट हुआ क्या कि एज सुन एज द प्राइस रीचेज 800 के आसपास, तो 8,800 वाले लेवल पे देखिए कितना ओपन इंटरेस्ट अनवाइंड हुआ. ऑलमोस्ट इट अनवाइंडेड अप्रोक्सीमेटली more than 2 lakh, right? And what happens, what these people did actually, they square off their position in 800 call option and they shifted their position to almost like 820 call option. You can see the quantum is approximately same. So the addition that happened is approximately same on 820 call option. Now what actually happened, these 800 CE sellers, right, were thinking that okay, this we have created a resistance, अब market इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए या stock इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए. But what actually happened, it moved up. As soon as the price came up, these sellers shifted their position to 820. So what happened, these option sellers got trapped here. Option seller यहाँ पर trap हो गए थे, इसीलिए price ऊपर गया है यहाँ पर, right? Okay, just give me a second. Okay, now you can see there is a trap happened at this price. Okay, that is very simple. Okay, now what will happen if tomorrow price goes to 820? The 820 option sellers will also start feeling that okay, they are getting trapped again, so they might shift to 840 or 850, right? तो क्या होता है अगर हम यहाँ पर एक बार लेवल देखें तो 800 लेट से और 8780, सो जब तक ये हाईएस्ट कॉल ऑप्शन है तो मार्केट इसके बीच में रहना चाहिए. If the highest call option is 800 and 780 is the highest put option, so that option seller wants market to remain in this range. But as soon as market break the upper range, what happened? The option seller shifted to 820. Now if the market further moves up, 820 sellers will shift to 840, right? This kind of shifting is kind of a trap that we are looking at right now. यही trap होता है, right? Okay. तो यहाँ पे ऑप्शन सेलर जैसे जैसे ट्रैप होते हैं, दे कीप ऑन शिफ्टिंग द पोजीशन. ओके, दैट मींस अगर ऑप्शन सेलर अपना पोजीशन चेंज कर रहा है तो क्या हो रहा है प्रॉब्लम, कि मार्केट ट्रेंडिंग है. ऑप्शन सेलर ऑलवेज वांट अ रेंज बाउंड मार्केट एंड दे एंटिसिपेट दैट दिस मार्केट लाइकली टू बी रिमेन इन दिस रेंज. बट इफ अ स्टॉक इज ट्रेंडिंग, क्या होगा कि दे हैव टू शिफ्ट देयर पोजीशन एनी हाउ. सो शिफ्टिंग, ये एक्चुअली ट्रैप जो होता है, ट्रैप एक्चुअली हैपेंस नियर द एक्सपायरी, बिकॉज वी नो कि वहां पर मार्केट में मोमेंटम बहुत ज्यादा तेज हो जाता है बिकॉज ऑफ गामा. एज यू हैव सीन दैट Shubhankar has a few week back, Shubhankar has shared a video of in the webinar he discussed about the gamma explosion, right? Because of this kind of trap actually happens in the market, right? Okay, now what happens pre expiry? Expiry के आसपास होता है, that is okay, but अभी क्या हो रहा है यहाँ पर, you need to see this, that they are not exiting the position, they are shifting this position. तो इस शिफ्टिंग की वजह से मार्केट में ट्रेंड आता है. तो अगर ऑप्शन सेलर अपनी पोजीशन शिफ्ट कर रहा है तो व्हाट एक्चुअली हैपेंस, क्या हो रहा है कि वहां पे एक स्टॉक ट्रेंडिंग हो गया या वो निफ्टी ट्रेंड हो गया या कोई भी पर्टिकुलर स्टॉक ट्रेंड हो गया. तो यही पोजीशन आपका ट्रैप इंडिकेटर आइडेंटिफाई करता है. ओके, दैट इज व्हाट द मीनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग, राइट? ओके, नाउ अब आप इसमें अगर सिचुएशन देखेंगे यहाँ पर राइट नाउ, सो यू विल गेट a lot of signals every day on the daily basis, right? Okay, तो कॉल राइटिंग ट्रैप का मतलब हुआ कि कॉल राइटर्स यहाँ पर ट्रैप हो गए.
दैट मीन्स स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा है। तो बॉश लिमिटेड में 14,500 की कॉल ऑप्शन पे शायद हो सकता है ट्रैप हुआ होगा। ओके, सो वी कैन इवन चेक इट इफ यू वांट। ओके, सो वी कैन चेक, जस्ट लेट मी सी इफ वी कैन गो एंड चेक द बॉश। इतना लिक्विड स्टॉक नहीं, बट स्टिल वी कैन सी 14,500 की लेवल पे देखिए इतना अनवाइंड हुआ है, ऑलमोस्ट लाइक 50% से ज्यादा अनवाइंड हो गया, और ये शायद हो सकता है इसमें शिफ्ट होने का कोशिश कर रहा होगा, राइट। ओके, सो ये अनवाइंडिंग जो हुई है 14,500 पे, दैट इज व्हाट द ट्रैप गॉट आइडेंटिफाई हियर। ओके, नाउ कमिंग बैक टू दिस अगेन। सो जब भी बहुत ज्यादा अनवाइंडिंग हो रहा है कहीं पर भी, तो ट्रैप इंडिकेटर उसको रिकॉग्नाइज करेगा एंड इट विल गिव यू दैट द स्टॉक हैज बिकम ट्रेंडिंग। ओके, ऐसे पुट राइटिंग ट्रैप होता है, तो कहीं ना कहीं पे कोई अच्छा लिक्विड स्टॉक दिखते हैं, ऑरो फार्मा दिखते हैं। ओके, ओके, लेट्स गो टू ऑरो फार्मा, सॉरी, ओ आई, लेट्स सी ऑरो फार्मा। ओके, नाउ अब ऑरो फार्मा में देखेंगे तो स्टॉक नीचे है, तो काफी स्ट्राइक प्राइस में अनवाइंड हुआ है 550, 540, 530 एंड देन दिस एडिशन स्टार्टेड हैपनिंग इन 520 एंड इन दिस लेवल। सो यहाँ पे जब मार्केट स्टॉक नीचे गिरा है, तो ये जो अनवाइंडिंग अक्रॉस 3-4 हर स्ट्राइक प्राइस के अंदर हो रहा है, इसी को उसने रिकॉग्नाइज करके आपको पुट राइटिंग ट्रैप दिया है। तो 530, 540, 550 पे जो ऑप्शन राइटर्स ट्रैप हुए हैं, उसका आपको ये ट्रैप यहाँ पे शो कर रहा है, इसलिए उसने बोला कि स्टॉक ट्रेंडिंग है डाउन साइड में, राइट। नाउ फर्दर इसमें क्या पोजीशन बनेगा, अगर 520 ब्रेक हुआ तो स्टॉक माइट फॉल टू 500, तो 520 ऑप्शन सेलर्स माइट शिफ्ट टू 500 अगेन, एंड देन आफ्टर 480 व्हाटएवर दीस लेवल्स कम्स, राइट, अकॉर्डिंगली। तो उस तरीके से शिफ्ट होता रहेगा, राइट। ओके, सो दैट्स द थिंग। तो ट्रैप का आई थिंक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ओके, लेट मी जस्ट सी सम क्वेरीज इफ आई हैव। ओके, टिल दिस पॉइंट। ओके, अभी मैंने कुछ भी नहीं एक्सप्लेन किया है। ओके, सो let me see if I have some queries today. Okay, okay, fine. Okay. That means I only eat what I want. Okay, that's okay. Fine. Now, अभी ट्रैप इंडिकेटर का हम निफ्टी का सिग्नल देखेंगे। ओके, ओके, लेट्स कम टू निफ्टी। अभी यहाँ पर निफ्टी का सिग्नल आपको नहीं मिलेगा बिकॉज इसमें नहीं है। सो लेट्स गो टू दी चार्ट एंड सी। ओके, अगर आप रीसेंट सिग्नल देखेंगे निफ्टी के ट्रैप इंडिकेटर के अंदर, तो इट विल गिव यू पुट राइटिंग ट्रैप, क्योंकि मार्केट ट्रेंडिंग में था, ट्रेंडिंग डाउन था, तो यहाँ पर कुछ सिग्नल्स आए हैं। तो पिछला से पिछले वाला सिग्नल में ऑलमोस्ट 5% का रिटर्न बना है, दैट इज ओके। एंड देन प्रीवियस सिग्नल जो आया था 10 तारीख को, तो नाउ यू सी, अब यहाँ पे चार्ट देखिए। ओके, फाइन। ओके, सी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम 10 तारीख को सिग्नल इसने दिया, ये चार्ट रेड में कन्वर्ट हुआ था। So that means it says that on this particular day, the option sellers got trapped. Okay, fine, fine, okay. So यहाँ पे option writers trap हुए थे। अब एक बार मैं query देखूंगा। Let me just finish this topic and I'll see all the queries. Okay. Now understand this thing. 10 तारीख को सिग्नल आया था, ओके, 16,200 के आसपास, एंट्री प्राइस वाज दिस। नाउ व्हाट हैपेंड ऑन 22nd, जो अभी रिसेंटली गया है, उसने एग्जिट दिया 22nd को। सी दिस ऑन दिस डे, जहां पे मार्केट ने बॉटम क्रिएट किया था, उसके पास ही यहां से सिग्नल हट गया। दैट मींस दिस सिग्नल गॉट ओवर। इट सेज दैट देयर इज नो शिफ्टिंग हैपनिंग, दैट मींस निफ्टी इज नॉट ट्रेंडिंग ऑन द डाउन साइड। ऑप्शन सेलर्स अपना पोजीशन शिफ्ट ही नहीं कर रहे नीचे की तरफ, बिकॉज दे माइट हैव स्टार्टेड क्रिएटिंग अ पोजीशन ऑन द हायर साइड। तो 22 तारीख को जब ये सिग्नल आया था, वहां से सिग्नल ही हट चुका है इस चीज का। दैट मींस इट्स ऑलरेडी ट्रेंडिंग, प्रॉब्ली जो इसका डाउन ट्रेंड है वो फिनिश हो चुका है। ना अगर आपका शॉर्ट पोजीशन है तो आपको क्या करना है, और अगर आपने कोई पोजीशन नहीं बनाया तो व्हाट यू नीड टू डू। ओके, तो अगर अब इसके साथ एक छोटा सा स्टडी और करते हैं ना, क्या ये सिग्नल सही होगा। लेट्स से इसको और हम दूसरों से कन्वर्ट, अगर हम कंपेयर करके देखें, सो एज वी हैव डन रिसेंटली दैट, अभी हमने आरएसआई का सिग्नल देखा, वहां पे एक डाइवर्जेंस का सिग्नल आ रहा है, तो माइट बी मार्केट इज लुकिंग गुड, राइट। ओके, नाउ अब निफ्टी का हम एक बार
ओपन इंटरेस्ट चेक करते हैं अंडरलाइन का, ओके, जस्ट टू कंफर्म दिस कि क्या सच में ऐसा कुछ हो रहा है, ओके। तो 22 तारीख को इसने बोला कि सिग्नल खत्म हो चुका है, दैट मींस अब शिफ्टिंग नहीं हो रहा है नीचे की तरफ मार्केट में, ओके। 22 तारीख है यहाँ पर इस दिन को, ओके, 22 तारीख ऑन दिस डे इतना बड़ा शॉर्ट आया उस जिस दिन मार्केट में इतना बड़ा शॉर्ट दिखा रहा है, वही उसी दिन उसने उसका सिग्नल खत्म कर दिया। इट सेज दैट द सिग्नल इज ओवर। तो शिफ्टिंग नहीं हुआ है वहां पर मार्केट में, राइट। एंड आफ्टर दैट डे ओनली आप 3 दिन देखिए मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर आ चुका है। मेजरली अब कंफ्यूजन यहाँ पर क्या है कि मार्केट में मूव लॉन्ग बिल्टअप की वजह से नहीं आ रहा है। अगर आप देखेंगे तो मोस्टली व्हाट इज दिस, इट्स अ शॉर्ट कवरिंग, राइट। तो अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन आएगा कि सर आप कह रहे हो कि वहां पर सिग्नल कट हो चुका है, दैट मींस हो सकता है मार्केट ट्रेंड रिवर्स कर जाए, बट यहाँ पे बाइंग नहीं हो रहा है। तो व्हाट आई कैन डू इज सिंपली एक चीज कर सकता हूँ कि अगर मेरा शॉर्ट पोजीशन है तो मैं उसे काट जरूर सकता हूँ, नया सौदा नहीं लेंगे अभी। नया सौदा जब मार्केट में बनेगा तब हम लेंगे। तो अगर मैं शॉर्ट में हूं तो एटलीस्ट शॉर्ट पोजीशन कम कर सकता हूँ। बट लुकिंग एट दी ओआई डेटा, कल एक अच्छा लॉन्ग आया था बट आज इसमें शॉर्ट कवरिंग हो गया, तो एटलीस्ट वी नीड सम इंक्रीज इन दी ओआई यहाँ से, राइट। ओके, और आज भी आपने देखा कि मार्केट में गैप अप हुआ है, ओके। सो दैट मींस दैट कुड बी वन साइन दैट कि अच्छा गैप अप हुआ था एंड देन मार्केट थोड़ा रिकवर करेक्ट भी किया उसके बाद से। तो कहीं ना कहीं पे मार्केट सपोर्ट लेकर के वापस ऊपर जाना चाहिए, बिकॉज सेलिंग का जो शिफ्टिंग हो रहा है हमने देखा ट्रैप में, वो हुआ नहीं है अभी तक पूरा, वो रुक गया है कहीं पे आकर के, तो इसलिए मार्केट ट्रेंडिंग नहीं है। तो नीचे से मार्केट के लिए सपोर्ट बनता जा रहा है, ओके। सो वो सपोर्ट कैसे देंगे, वो ऑप्शन सेलर्स का पोजीशन को देखना पड़ेगा यहाँ पे, ओके। तो इस एक्सपायरी में वी आर वेरी क्लोज टू दिस एक्सपायरी। नाउ सी व्हाट हैपेंस, ओके। तो 15,500 का अगर हम लेवल देखें तो सबसे ज्यादा, अगर वैसे देखें तो 15,000 पे सबसे बड़ा सपोर्ट है, दैट इज अ ह्यूज एडिशन हैपनिंग। बट ऑन द वेरी रीसेंट अगर हम देखें 15,500 पे काफी अच्छा पुट ऑप्शन बना हुआ है। एंड टुडे आज का एडिशन भी अगर आप देखेंगे तो 15,700 पे अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट 60 lakhs का ओपन इंटरेस्ट, जिसमें 30 lakhs आज ही ऐड हुआ है, तो देयर इज अ गुड एडिशन हैपनिंग। एंड ऑन द हायर साइड 15,700 पे काफी अच्छा अनवाइंडिंग हुआ है, 15,900 पे भी अच्छा अनवाइंडिंग होना शुरू है, 16,000 पे आपका एडिशन होना स्टार्ट हुआ है, तो यहाँ से शिफ्टिंग इधर हो गया। बट अभी तक निफ्टी का बाइंग सिग्नल ट्रैप इंडिकेटर में नहीं आया, तो कंफ्यूजन ये है कि मार्केट ने शायद बॉटम क्रिएट किया है यहाँ पर, डाइवर्जेंस बता रहा है, ट्रैप इंडिकेटर में सेल का सिग्नल खत्म हो चुका है, और ऑप्शन सेलर्स का पोजीशन ये बता रहा है कि यहाँ से बॉटम बनना शुरू हो गया, बिकॉज सी कॉल में ज्यादा एडिशन हो रहा है नीचे की तरफ से, सॉरी पुट में एडिशन हो रहा है यहाँ पे, तो दैट मींस मार्केट इज लाइकली टू शिफ्ट फ्रॉम हियर ऑन द अपसाइड, ओके। बट एक कंफ्यूजन सिर्फ इतना आया है कि अभी अंडरलाइन के ओपन इंटरेस्ट में कुछ पोजीशन ऐसा नहीं है जो हमको एक सिग्नल दे कि हाँ यहाँ से बाइंग पोजीशन बनना शुरू हो गया, क्योंकि उसमें भी शॉर्ट कवरिंग का मूव आ रहा है। तो अब क्रक्स सिर्फ यहाँ पर इतना बनता है कि अगर हम मार्केट को यहाँ पर स्टडी करें तो इफ मार्केट यहाँ से मूव करके 16,000 का लेवल ब्रेक कर देता तो इट विल डेफिनेटली मूव ऑन द हायर साइड, ओके, क्योंकि रेजिस्टेंस एक बहुत अच्छा बना हुआ है, नीचे की तरफ गिरता है तो 15,700 के आसपास से सपोर्ट लेकर के चला गया, दैट इज ओके, ओके। और अगर हम टेक्निकल चार्ट्स में देखा जो बॉटम बना है 15,200 के आसपास, वो टूटेगा तो मार्केट फर्दर स्लिप कर जाएगा, तो दैट इज द व्यू राइट नाउ, ओके। सो the only thing is that if market has created a bottom, it will not fall below 15,200 anyhow. The reason being is that trap indicator suggests that कि market में bottom यहाँ पर ऑप्शन राइटर्स अपना पोजीशन पुट पे शिफ्ट नहीं करे, दैट मींस मार्केट हैज टू गो अप फ्रॉम हियर। और ओआई डेटा भी सजेस्ट नहीं कर रहा, और यहाँ पे ऑप्शंस में एक ओआई डेटा हमको ये बता रहा है कि आज की गैप अप की ओपनिंग की वजह से 15,700 का लेवल पे अनवाइंडिंग हुआ है, एंड यू कैन सी 16,000 पे सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है, एंड पुट में अच्छा एडिशन हो रहा है, तो दैट इज अ support from the market, right? So till this point I think we are okay. So let me see some queries, okay. There are many stocks, how to choose it, okay, I'll talk about this. Isn't the trap indicator a reflection of the price movement only? Yes, it is a price movement only, but it also captures the behavior of the option sellers once this unwinding is happening on these strike prices, okay. तो राहुल जी, आई थिंक ये आपका क्वेरी क्लियर हो गया होगा, ओके। सो इफ द कॉल लेटर्स आर ट्रैप्ड वी शुड गो लॉन्ग। सुब्बू जी, यस, इफ द कॉल लेटर्स आर ट्रैप्ड वी हैव द स्टॉक इज ट्रेंडिंग ऑन द हायर साइड, ओके। Okay, now is this data comes live from the NSE or to our Quantsapp? Yes, the data is live, so you will get this live data on this, Dinesh ji, okay. What should be to take the exit position on this trap indicator? So I'll come to this. I hold two queries, okay, based on the how, okay, so I'll talk about this, okay. So जो भी ट्रेड वाला ट्रैप इंडिकेटर से ट्रेड एग्जिट ये पोजीशन है, मैं एक साथ में एक्सप्लेन करूंगा। कैन यू एक्सप्लेन व्हाट इज गोइंग ऑन 15,900 स्ट्राइक प्राइस?
15,900 स्ट्राइक प्राइस में पुट में एडिशन हुआ है, कॉल में थोड़ा सा अनवाइंडिंग हो रहा है. ओके, व्हाट डू यू मीन बाय अंडरलाइंग इज की अंडरलाइंग मतलब निफ्टी के फ्यूचर्स में क्या पोजीशन बन रहा है. ओके, नॉट रिक्वायर्ड टू पुट स्टॉप लॉस. ओके, आई विल टॉक अबाउट दिस. तो यहां तक आई थिंक क्लियर हो गया है हम लोग को कि ट्रैप का सिग्नल कैसे आता है, ट्रैप का सिग्नल का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया. ओके, अब इसमें एंट्री कैसे करना है, एग्जिट कैसे करना है, विल टॉक अबाउट दिस. ओके, नाउ एक बहुत अच्छी बात क्या है ट्रैप इंडिकेटर की कि अच्छा बैंक निफ्टी का भी सिग्नल था, वी कैन अगेन चेक दैट आल्सो, राइट. ओके, जस्ट अ सेकंड. अभी सारी क्वेरी सॉल्व कर दूंगा कि हाउ टू डू दिस. ओके, जस्ट गिव मी अ सेकंड. ओके, बैंक निफ्टी का इसमें सिग्नल नहीं है, दैट मींस बैंक निफ्टी का सिग्नल भी यहां से एग्जिट हो चुका है. ओके, सो बैंक निफ्टी ने भी सी ऑन दिस डे अराउंड समवेयर हियर ओनली, यहां पर इसने एग्जिट दे दिया 23rd को. दैट इज आल्सो गिव यू ऑलमोस्ट 3 to 4% मूव, राइट. इंडेक्स में 3 to 4% मूव is there. Okay, so the key point is only here is that the market is, so if the signal got over in the trap indicator, this might be a sign that market is the option sellers are not shorting the position on the downside, so that means market might be reversing from this level. Okay, and OI data does not suggest that the buying is coming, and options OI data suggests that there's unwinding happening 15,700, addition happening on 16,000, and good addition happening on the put side. So that means the push option sellers might pushing the market up. This is what the the key points that we have discussed till now. Okay. Okay. No, it's not delay actually. So on the basis of data, what we receive is that we receive data on NSE on a different time frame, but it is not delay like 3 minutes. It's getting updated in their website only. Okay, so we receive the data in small packages, so it might be updated in 1 minute also, it can update it in 2 minutes also, but it will never be delay more than 3 minutes anyhow. Okay, now let's talk about the benefit of the trap indicator first. Okay, let's take an example. I'm randomly opening a stock, let's say Ambuja Cement. Okay, or we can open Infosys also. I'll show you that. Okay, fine. Okay, so let's talk about Ambuja Cement. So Ambuja Cement has a lot of signals here. Okay, so the current signal which generated on this 6th, okay, and it got exit on 23rd. So that's 1.68% return. That is okay, right? Okay, this signal got exit. So this is not got executed. So that exit on the same day, next day. Okay, call right a trap. Very small loss. That is okay. Very small loss. That is okay. Very small loss. That is okay. Okay. But if we go further back, we have a 13% gain in this. So that's a huge trade that we got. On before that, we have another trade which is like 19%. So this trade might have given a 19% move. And on this day, see now, that is why I'm talking about. See what happened. From this here, market created a bottom, and see on this day it says that the market is created a bottom. So people are not shifting the position on the downside. Now what is happening? The option sellers are stable and they are pushing the market up. So see what happened on from this low only, the day the signal got over, from that market went up, the stock went up. So entry point is good, but exit point is also giving us a signal that okay, market has created a bottom or top, right? Try to read this indicator. See, I cannot create a best thing than this. Okay, this single indicator is of a huge value, right? Okay, and see what could be the next thing that see any loss trade that we have is not more than anyhow 2%. I would say not even a 2% in this stock. Okay, so there might be different move on different stocks, but on an average, these stocks ask you to take exit very quickly if the trade went wrong. Okay, but if that moves, it can give you up almost like this much points, right? 16-17%, 16-18% return you can get also. Okay, fine. So entry point समझ में, अभी entry point मैंने discuss नहीं किया, मैंने कुछ भी discuss नहीं किया. I'm just talking about what is the trade. Okay, so this is the underlying movement that we have. और एक चीज समझ में आता है, ट्रेंड अगर ट्रैप का सिग्नल खत्म होता है, that could be a possible reversal I'm talking about, right? Now let's go to the Infosys, or we can check any particular stock. I'm not specifically going with this. Okay, so see the signals that we got in the Infosys recently. So almost 2.5%, 20% move, very less, but not actually in loss. So here a very minimum loss. Again, good moves like 7%, 2%, 3%,
almost like, so loss, if you see the loss moment is very less. Okay. Now let's go with the Tata Motors. Okay, you can check any particular stock, not specifically that I'm suggesting. Okay, so see 4%, 4%, 4%, 2%. Loss is just less than 1% here, and again 2%, 5%, 2% loss. That is okay. 2.4% here we got a loss of 5%. That is okay. There might be some gap down opening. Okay, that is okay. Again 4%, 1.2%. That is okay. And then see we got 30% move also in this, right? So the trap indicator signals are very nice. Okay, this is what we need to understand. Okay, I hope till this point we understood what is the view. So black color line is a kind of an exit. So the day it turns from green to black, that means the call writing trap signal got over. From red to black, it says that the sell trade gone over. Right? Okay, till this point, okay. I think I make sense till this point. Now, when to take a trade? The question is always comes. So there is a confusion between traders when to take a trade. So let me just come to that point, that when to take a trade. Okay. So see, these are the trades we got today. So because there might be movement happening in these stocks, and there might be option sellers getting trapped even in the call side, on the put side also, right? So which stock to trade? First, ignore the stock which is illiquid. Okay. Okay, so first of all, okay, so ignore the stock which is illiquid. This APL Limited is not probably liquid on the option side, because we need to take the trade on the option side. We are not talking in terms of futures as of now. So futures ka return batata hai ki how much future have moved once that this trade has been taken out. Okay, but we need to improvise on the options specifically, right? Okay, clear? Okay, let me see. Okay, so that is okay. Sorry, sir, to interrupt you regarding this trap indicator. Last time there we were positive about TVS Motor, where we could have taken 2 lots ATM call and 2 lots ATM put. Could you please comment on this? Yes. So that's, I'm going to talk about how to take the trade now. Okay. So just understand first which trade to ignore. So there are a lot of stocks which are like, illiquid in this case. So don't go with those stocks. Okay. Just go with first few stocks, like first 20, 30, or let's say first 40 stocks that would work in F&O, right? Okay. Or Nifty, right? Okay. Because they are a bit liquid. Even if you see my morning brief, I given today Hindustan Unilever from this trap indicator only. Okay, and this was the price it gave me today, and is generating a return of 2.75. Okay, that is simple. You just need to find this stock. Okay, fine. Okay. No, you don't have to be. It is reliable because it's very simple. Okay, you don't have to be question on this, because this is a good trade, right? Okay. Now, how do we take a trade? Any stock, any trade that comes on this particular stock, okay, anywhere, like say Oro Pharma, this is giving me a put writing trap. So probably this is liquid, so I'm going to go with this trade. It says that around 520 is giving me a kind of a trade, right? Okay, so no, we know that the return on this is very good. So if the return comes, I'm going to earn good amount of return, right? Let's say if the stock fell to 500 or 480, that means the stock is good trending. Okay, but what if the stock goes around and it asks me to take exit? So 1%, 2%, that is a maximum that we have seen. Okay, so अगर इतना कुछ लॉस में निकल जल्दी छोटे लॉस में निकल जाता है, तो इससे बढ़िया चीज क्या हो सकती है? So what we need to do is we just need to simply go and use this architect and create one strategy which is on the limited side. Okay, so I'm just sharing one thing. We can just simply go to the predefined strategies. We can go with Oro Pharma. Okay, so this is not a suggestion, this is just kind of a I'm just wanted to share that how can we approach any particular signal that if we get, right? Okay, so bear put spread, we can try this, just a one stock. Okay, so this 520 I'm going to buy, and probably 500 I would sell. That would suffice the purpose. Okay, and even if you see the risk what is adjusted in this, so I'm maximum up. So if I'm just creating this position for 3 days, let's say the expiry is very near,
So I'm going to lose not more than 3,000 if my target suggests I'm going to earn 11,000 rupees. If my target comes around 500, that is what I'm anticipating. So if the good moves comes, we can carry this. Now we are entering the very last expiry. I can shift this position to the next expiry also. I'm anticipating that, okay, my target will come by 10. So I can just put a strategy which might help me in this way, right? Okay. So any particular strategy which is have a limited risk. Okay. Okay, let me see. Is there any way can identify the Nifty, Bank Nifty, then pop-up coming in or not required as such? So what you need is, let's say I've taken a position in. What I'll do, let me just save a position here. Okay, save a position here. Now what we need to do is, whenever the trap signal comes, how do we need to identify? How do we take a trade? Let's say I've taken a trade in the Oro Pharma. So you don't have to check it on daily basis. Okay. So you don't have to check it on intraday specifically. So it gave me a sell signal today open. So it keep on showing you open. So come to the chart and keep on showing, see it. Now what happens is that the stock, so tomorrow if the stocks fell, so it will start generating a red signals here. Okay, that is okay. Just see once in evening and just, if the red is there, ignore it. If the red is there next day, ignore it. It's going down. If the red is there, ignore it. Just keep holding the position. As soon as this red turn into black, so next day in the morning session, go and take the exit. So same way we need to enter in this strategy. Okay, so trap indicator in Oro Pharma, we got trade today 27. So I will not take trade in intraday. I will wait for the stock to so open tomorrow. So if tomorrow the stock opens within the not more than 1.5% up or down within that range, so what I'll do, I'll just simply create any particular strategy which gives me a good return on the downside and limited risk on the higher side. So I should not lose more than, okay, that we are anticipating. So this is how you can simply approach this. Any strategy, I'm not saying bull put spread, bear put spread, any strategy which might give you a good return if market moves down and very limited risk if market moves against us, right? So that you can simply try. Okay. And as we have seen that, if the buy, see, even if you see here, the trap indicator gave me a signal of call at a traps here. As soon as the signal went off, the market reverses from their point, right? So here, see, if market was in the put writing trap, as soon as the trap signal goes over, market went up. Okay. So this is a very good indicator, right? Okay. So I personally like this very indicator. If I even want to take a trade, I'll just go and simply use this, Oro Pharma as a, this trap indicator for my trading system, right? Okay. The only reason is that you need to follow it properly. That's all. And learn to find one particular strategy that looks good on this, right? Okay. I hope I have answered all the queries. Doesn't matter if it is on the negative news. If it's negative news, it will fall, right? So the derivative data is already suggesting that it's likely to be going down because the people are creating a short position. Okay, Vijayji, I think I've answered your query. Fine. Okay, so I'll talk about the price. Okay, that's the trap indicator. Signal is the only price to enter or to be valid for entry. Okay, you can enter on the same price. So that's why I told you, Prachiji, that's why I told you that if the market opens within that 1.5% range, that okay, you can take a trade. But if the market moves like more than 2.5%, then you need to ignore the signal and take the trade or select other stocks. Okay. No, you need to come and see this trade. Every day on the evening. दिन में देखना ही नहीं. You don't have to see this trade on this on intraday, right? Okay. MFSL का trade क्या है देख लेते हैं. Okay. So MFSL में अभी buying का trade आया है. Okay, 24 पे आज ही trade आया. Okay, so this suggests that okay there might be a buying move coming up in this, right? Samit ji, I think I have solved your query. Navneet ji, I think I've solved your queries also. Okay, so what you can do is that probably you guys are very new to this. If you are very new to this application, you can simply go and register the application. Go to the promo code, okay, and write YTube. Okay, YTube. Okay.
वाई ट्यूब आप लिखेंगे तो आपको यहाँ से 2 दिन का फ्री सब्सक्रिप्शन मिलेगा. यू कैन ट्राई दिस. ओके, तो अभी है आपके पास 2 दिन मिलेंगे, तो यू कैन स्टिल ट्राई दिस. तो आपका पूरा सब्सक्रिप्शन ऑन हो जाएगा. यू कैन एटलीस्ट ट्राई दिस. ओके, फाइन. On which factor the trap indicator is generated, or we put a stop loss on the trade of future. नहीं प्राची जी, सिंपल सा लॉजिक है इसमें. आपको क्या देखना है कि you need to, so this is on the call writing trap, how the options are shifting the position on the next strike price. तो अगर ऑप्शन सेलर्स अपना पोजीशन शिफ्ट कर रहे हैं तो दे आर ट्रैप्ड इन दिस. सो वो ट्रेंडिंग शो करता है मार्केट. ओके, एंड स्टॉप लॉस इसलिए नहीं लगाना है. द ओनली थिंग इज दैट कि वी आर क्रिएटिंग अ स्ट्रैटेजी बेस्ड ऑन दी लिमिटेड रिस्क. तो ऐसा कोई लिमिटेड रिस्क स्ट्रैटेजी बना दीजिए और होल्ड करिए. अगर आपको ट्रैप इंडिकेटर एग्जिट दे देता है, देन एग्जिट द होल स्ट्रैटेजी. दैट इज आई एम टॉकिंग अबाउट. ओके, yes, we need to filter out the liquid stocks. Okay, because options में trade करना है तो we have to do it. Okay, so just I'll tell you again, as soon as you register for this, तो आपको क्या करना है, अपनी प्रोफाइल में जाइए, go to the have a promo code. यहाँ पर आप YTube प्लेस कर दीजिए. ओके ओके, अगर आप न्यू सब्सक्राइबर हैं तो आपको 2 दिन का इसमें सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा. ओके, सो मेरा अब तो ऑलरेडी एक्टिव है, सो मेरे को नहीं प्रॉब्लम है, बट आपको दिखा देगा. यू कैन, इट विल गॉट एक्टिव फॉर यू, राइट? ओके, ट्राई इट, यूज इट, सी हाउ यूजफुल फॉर इट फॉर यू गाइज. ओके, एंड यू नो टेक दिस. ओके, Akbar ji, I don't know what is this, what is that. Okay, yes, we can take a trade, but not suggested. Okay, because कभी कभी किसी दिन गैप डाउन हो गया बहुत बड़ा, तो वी आर नॉट टेकिंग दिस. ओके, सो आई होप वी ऑलवेज गो विद द लिमिटेड स्ट्रैटेजी इन दिस. ओके, आई होप आई आंसर दिस क्वेरी. पुट राइटिंग ट्रैप, it okay, so let me see if I left out the queries. Pro already used, doesn't matter, you will get that at least one time. Hitesh ji, you can get one time at least 2 days subscription. Okay, don't worry. अगर pro already use कर लिया तो probably it will again get activated for 2 days, right? Okay, so I think we are done with this. Okay, a few queries I can see. Dhruba Roy ji, sir, put right a trap but it fell, please check on the other chart. Oh, sorry, I didn't get this query. Dhruba ji, if you can put your query again, so that will be helpful for me. Okay, I think we have. Okay, yes, I will take a webinar on option writer tool soon, right? So it is already scheduled. You will get the confirmation for that. I'm going to take that also, right? Okay, pro already used. Hitesh Shah ji, I need to see this. Probably you can approach support at Quantsapp if that is happening. Okay, once that will help you. Okay, support at quantsapp.com. You can put your query there. They might help you in this, right? Okay, fine. So let me just conclude what we have done. So as I told you, there are 2 things. I'll take 5 minutes to explain what we have done till now. So on the basis of this particular understanding, that is market has created a bottom or how to find a trend. So दिमाग नहीं लगाना है, simple सा logic. Okay, the only crux is this, दिमाग नहीं लगाना है इसमें. I've shown you कि टेक्निकल चार्ट्स में कैसे बॉटम होता है, वहां पर कैसे होता है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग. बट अंडरस्टैंड द फैक्ट दैट कि ट्रैप इंडिकेटर क्या है. सो पहले हम ट्रैप इंडिकेटर समझ लेते हैं कि क्या है. निफ्टी में हमने सिग्नल देखा, इट गेव अ पुट राइटिंग ट्रैप. दैट मींस ऑप्शन सेलर्स आर they are scared that they're shifting the position on the lower strike price as market is falling. So market is trending on the downside. अगर पुट राइटिंग ट्रैप में सिग्नल आता है, सॉरी ट्रैप इंडिकेटर में सेल का सिग्नल आता है, दैट इज पुट राइटिंग ट्रैप, वो ये शो कर रहा है कि मार्केट ट्रेंडिंग डाउन है और पुट राइटर्स अपना पोजीशन डाउन स्ट्राइक प्राइस में शिफ्ट करते जा रहे हैं. ओके, डाउन 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 डाउन. ओके, फाइन, दैट इज द थिंग. सेकंड थिंग क्या है, एग्जिट के बारे में. आई जस्ट टॉक इट, जस्ट गिव मी अ सेकंड. ओके, तो शिफ्ट हो रहा है, तो इसमें हमका पुट राइटिंग ट्रैप हो रहा है. सो व्हाट दे डू, दे कीप ऑन टेकिंग द यू नो शिफ्टिंग. सो वहां पे वो ये बता रहा है कि निफ्टी उस टाइम पे ट्रेंडिंग डाउन है. जैसे ही ऑप्शन सेलर्स ने पुट राइटर्स से अपने अपना पोजीशन शो करना, शिफ्ट करना स्टॉप किया, मार्केट ने रिवर्स दिया और वहीं से इट लुक्स लाइक मार्केट हैज क्रिएटेड अ बॉटम. द ओनली कंफ्यूजन वी गॉट इज स्टिल नाउ कि बिल्टअप में, अंडरलाइन में अभी तक कुछ लॉन्ग बिल्टअप हुआ नहीं है बहुत अच्छा. तो जब तक वो नहीं होगा शायद प्रॉब्लम मार्केट ऊपर नहीं जाएगा. बट एनी हाउ वी गॉट अ लेवल कि 15,500 या 15,200 का लेवल जब तक नहीं टूटता, मार्केट नहीं नीचे गिरेगा. ओके,
सो ट्रैप इंडिकेटर का सिग्नल सेल का जाने का एक इंटरप्रिटेशन ये भी हो सकता है कि मार्केट ने बॉटम क्रिएट किया और यहाँ से ऊपर जाना शुरू हुआ. सेम हैपन विद बैंक निफ्टी ऑल्सो. हमने अंबुजा सीमेंट के 2 एग्जांपल भी देखी जहां पर ऐसा हुआ है. औरो फार्मा का भी मैंने आपको एक सिग्नल दिखाया कि जैसे उसका सिग्नल ऑफ हुआ मार्केट ने एकदम से ट्रेंड रिवर्स किया, राइट. तो दैट कुड बी यू नो दैट इज द थिंग. ओके, सिंपल है, अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर हुआ है. ओके, सो दैट इज ओके. Pradeep Simhaji, okay, you're joining my course. Oh, so I'll see you there, right? Okay, fine. Okay, so that is the thing. So signal हमारा जनरेट हो गया. ट्रैप इंडिकेटर के अंदर जब आपका सिग्नल जनरेट हो चुका है तो ट्रेड कब लेना है? अगले दिन 9:20 के बाद हमें ट्रेड इनिशिएट करना है. 2% से ज्यादा मूव नहीं होना चाहिए स्टॉक. गैप अप गैप डाउन के साथ अगर होता है तो उसके अंदर है तो विल गो एंड टेक अ पोजीशन, राइट. दैट इज अ वन थिंग. The next time is second thing is that what you can do is सिग्नल आ गया, स्ट्रैटेजी कैसे बनाना है? एक लिमिटेड रिस्क स्ट्रैटेजी ढूंढ लीजिए कोई भी, ओके, जो आपको लगता है कि रिस्क रिवॉर्ड अच्छा देता है. ओके, सो जस्ट डिप्लॉय इट एंड व्हेन टू टेक एग्जिट. ईदर योर स्टॉप लॉस गॉट ट्रिगर्ड, दैट मींस इट सेज दैट यू नीड टू टेक द एग्जिट. तो अगर ये नेगेटिव में जाकर के ऐसा बोल देता है कि 1.5% पे आप निकल जाइए तो जो भी आपका प्राइस था टेक द एग्जिट. व्हाट वाज द पुट राइटिंग ट्रैप एट दिस प्राइस? पुट राइटिंग ट्रैप वाज 708 and the price went up to 790. so वहां पे बोला निकल जाइए तो भी exited. okay, fine. but जहां पे अच्छा मूव आया, जैसे मान लीजिए put writing tab, it shows that we will go sell at 844. 844 पे सेल दिया, मतलब सेल का सिग्नल आया. 812 पे उसने एग्जिट बोला तो उस दिन पे हम अपना स्ट्रेटेजी काट देंगे पूरा. ओके, फाइन. that is, I think that will help you for the exit query also, right? Okay, fine, that's all. So this is how we talk about this. Okay, I hope you like the session. I'll just ask for one favor from you guys, that so you guys have started using, if you like this, just scan this code and give me a small rating. That will help me. Okay, I know it will take just 2 minutes, so if you help me with the query, just put one rating, any rating, whatever you feel like, and put your comments there. So you can just scan this code, and that might be, help me actually to, put the, application on the higher side, right? Okay, so just do that. Okay, it will take 2 minutes, right? Not more than that. Okay, fine. So I need genuine the comments or ratings, right? Okay, and use the code, start using this. If you want to take time, you take 2 days, use the application, and then give a rating. You can directly go to the Play Store and give the rating. It will, if you scan this code, it will automatically take you to the the Play Store. Just put a ratings there only, right? Yes, apart from this, if you have any query, I just keep this screen open. If you have any query, you can put in the comment box. Okay, some days back I've used the promo code for 12 days, but I can't see this time. Can I get this 2 days trial again? Vijay ji, probably वो एक बार ही applicable होता है. So probably if you can just contact support team, they might help you in this case. Okay, fine. But I think not applicable. होना नहीं चाहिए, because वो कोड इसी तरीके से बना होता है कि एक आईडी पे एक ही बार यूज होगा. Okay, that is the thing. Okay. ओके, कुशाल जी, आई थिंक एग्जिट का क्वेरी मैंने दे दिया है. हितेश जी, आपका भी क्वेरी हो गया है. ऐप यूजेज इज कंफ्यूजिंग. बशीर जी, इफ ऐप यूजेज इज कंफ्यूजिंग देन यू कैन सिंपली गो टू द डेमो वीडियोस एंड चेक इट, राइट? तो धीरे धीरे लर्निंग करके होता है. इवन मेरे को भी बहुत टाइम लगा था सीखने में, बट यू विल गेट इट, राइट? ओके, सो आई होप यू हैव जस्ट पुट अ स्मॉल रेटिंग फॉर मी. दैट वुड डेफिनेटली हेल्प मी. ओके, नहीं किया तो जस्ट टेक 1 minute एंड पुट दिस थिंग. तो निफ्टी का सिग्नल में ओके, सो निफ्टी का जो सिग्नल है उसमें जिसका सेल सिग्नल है वो खत्म हो गया ट्रैप इंडिकेटर में. तो दैट सजेस्ट की मार्केट में यहाँ पे आपका एक बॉटम आउट पैटर्न बन रहा है. और हमने डाइवर्जन से भी कंफर्म किया. ओके, एंड अदर डेटा एक बार लॉन्ग बिल्टअप आना शुरू हो जाएगा, दैट वी कैन सिंपली गॉट इट. ओके, फाइन. तो अच्छा, कोड कैसे यूज करना है? यू कैन सिंपली, आई विल अगेन हेल्प यू विद दैट. ओके, सो आप जाइए प्रोमो कोड में और यहाँ पर आप लिख दीजिए. रजिस्टर करने के बाद मेक श्योर, अगर आप बिल्कुल ही नई यूजर है तो आप पहली बार अगर डाउनलोड करें, अपना नंबर रजिस्टर करेंगे तो यू विल गेट अ 7 days
trial automatically, right? But अगर आप already use कर चुके हैं तो you can just use this, okay? That's not an issue. But you do use it, right? And use this indicators and in very well, okay? ठीक है? ठीक है, तो ये करके आप अप्लाई करेंगे तो विल गेट दिस थिंग. Okay, I hope this will help you. Any other queries? I see that there are a lot of queries. Okay, so further any queries you can ask me. I'm there. Okay. Okay, fine. Okay. Okay, I think I have ordered. I think I have answered all the queries. Okay. कुछ और डाउट रहेगा तो you can simply put it in the comment box and you can simply learn it. Okay, see at the end सबका क्रक्स है पैसा बनाना है, right? Okay, पैसा जब यहाँ पे रिटर्न्स में बन रहा है तो अपना दिमाग नहीं लगाना है वहां पे. Simply go and just put the queries, proper strategies on these signals. These signals are way far better than any particular technical signal, right? कितना भी अच्छा एक्यूरेसी निकाल लेंगे उससे बेटर रिजल्ट आपको यहाँ पे मिलेगा. ओके, ठीक है. So use it, right? Use your just a very simple common sense and इतना कोई hard नहीं होगा ट्रेडिंग, but discipline चाहिए यहाँ पर इसको फॉलो करने के लिए भी. Use this, okay, and then you can just do it. Okay, I'll repeat the scan again. So just if you can help me with this, right? Okay, so yeah, Vishesh ji, thank you so much. Ekmar, I don't know what's the real name, but Ekmar ji, thank you so much. Okay. ये सितेश जी मैंने आपका ओपन कर दिया है. ओके, यस, ठीक है. सो आई थिंक वी हैव डन विद दिस सेशन. आई होप you like it. So probably we'll come with another session soon, right? Okay, option writing पे भी I'll do a session again soon. Okay, so do join that and see how we have created the new tool for option writers and how that will going to help you in this, right? Okay, barcode open है sir, you can see that simply. Okay. Okay, so ठीक है guys, probably it's good to see that a lot of people joined even in late session, right? So you got the crux that I wanted to share with you, that कि trap indicator के signals are very nice and they can even help you to predict the market bottom and top also. Okay, और गलत भी हो तो कोई बात नहीं, गलत हो गए तो दूसरा टॉप पकड़ लेंगे, बट द रीजन बीइंग इज दैट सिग्नल इज वेरी सिग्निफिकेंट एंड अगर वहां से हमने टॉप और बॉटम पकड़ लिया मार्केट का तो वी कैन इजीली कैच अ वेरी बिग ट्रेड, राइट? निफ्टी में इतनी जल्दी सिग्नल नहीं आते. ओके, इसके अगर दो सिग्नल्स बहुत अच्छा सिग्नल देकर गए, उसका रिवर्सल भी आ रहा है, दैट्स इट्स अ गुड साइन, राइट? ओके, the returns are calculated on the future side. Yes, Prachi ji. Okay, sir, some white lines shows in the trap indicator. What is that white line? I can't see white line. There will not be a white line if you change the theme. So if you change the theme, if you change the theme to dark, so it might show you. Okay, it might show you a kind of a white line. So इसमें signal is on red on green only. थीम चेंज होने पे बस वो चेंज कलर हो जाता है. ओके, फाइन. ओके, ओके, thank you so much Sabdar ji, thank you so much. So okay, so let's end this session. Okay, try to see this video again if you are left out some part. शुरू से देखेंगे तो we have discussed lot of things. One more thing please, if you have any query again put that in the comment box, right? Okay, probably I'll see it, reply it again. My team will definitely help you in that. Okay, fine, thank you so much guys. Okay, fine. Yes, okay, so see you again. Okay, probably soon. Bye guys, take care so much. Thank you so much.